हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेटा साइंस लर्निंग सीरीज। आज हम लोग इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड लाइब्रेरीज इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिसिस विच इज़ NumPy। विल स्टार्ट दिस वीडियो बाय अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट एग्जैक्टली इज NumPy। फिर हम लोग समझेंगे कि इसका कोर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी क्रिएट, मैनिपुलेट एंड परफॉर्म एक्शंस ऑन आर NumPy अरेज विच कुड बी 1D अरे, 2D अरे और 3D अरेज। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक्स इन NumPy अरे सच एज ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, अरे पे स्टैटिस्टिक्स कैसे अप्लाई करते हैं, अरे का इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सो वेदर you are a beginner or experienced data scientist, or you are just looking to brush up your skills on NumPy to prepare for your interviews, so this video is the right place for you. So now let's get started with NumPy. This video is also going to be a hands-on video, so I request all of you to please try out along with me. इस वीडियो का जो भी कोड है उसको मैं अपने गिटहब रिपोजिटरी में भी डाल दूंगा, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विच यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम वेन एवर यू नीड इट। तो इफ़ यू रिमेंबर कि लास्ट टाइम हमने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया था एंड दैट इन्वायरमेंट नेम वॉज टॉर्च। तो हमें सबसे पहले टू गेट स्टार्टेड विथ NumPy अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना होगा। एंड टू एक्टिवेट वी हैव टू ओपन आवर टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट, write this command and there you will see कि torch has come, which means कि now we are in the separate environment from our laptop। तो इसमें सबसे पहले हमें अपना NumPy इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो NumPy इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा कमांड है pip install and then NumPy। so this will go and try to search your indexes and then install NumPy for you। in my system, since NumPy is already installed, so it has kind of just showed that requirement already satisfied, but in case of your systems हो सकता है ये 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा। once NumPy is installed, then we will have to open up our Jupyter notebook to get started with the hands-on। तो Jupyter notebook खोलने के लिए सिंपल सा कमांड है which is Jupyter space notebook। we'll copy this, paste it here, and this will open up a notebook for us in a separate browser tab। So I already have created a Jupyter notebook for all of you and we will be going through this notebook in this video। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ NumPy। तो NumPy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, और NumPy अरे जो है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है ऑफ द सेम डेटा टाइप। तो अगर आपको याद होगा पाइथन लिस्ट, जहाँ पे कि लिस्ट में हम लोग एनी डेटा टाइप का एलिमेंट्स को रख सकते थे, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो। वेर एज इन केस ऑफ NumPy इट शुड ऑलवेज बी द सेम डेटा टाइप। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम इंटरव्यूअर भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन NumPy अरे एंड पाइथन लिस्ट। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक डिफरेंसेस कि NumPy अरे में सेम डेटा टाइप होता है, वेर एज लिस्ट कैन सपोर्ट एनी डेटा टाइप। फ्यू मोर डिफरेंसेस वो ये है कि NumPy अरे आर मोर एफिशिएंट and provide supports for various mathematical operations and functions। तो what are the different characteristics, ये भी हम लोग बोल सकते हैं जब भी इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछता है तो, कि NumPy अरे इज़ होमोजीनियस डेटा टाइप, यानी कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए। इट सपोर्ट्स n डायमेंशनल अरे, या फिर इसमें मैट्रिक्स हो सकता है, 1D अरे हो सकता है, 2D अरे हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इफिशियंट, इट इज़ डिजाइंड फॉर एफिशिएंट न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। सो बेसिकली NumPy जो है इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ C++, विच मेक्स इट मोर इफिशियंट, very efficient to perform any numerical operations। तो it is also memory efficient कि it uses contiguous blocks for memory storage, making it more memory efficient for Python list। तो Python list के comparison में memory efficient है NumPy array, और you can store huge amount of data or values in your NumPy arrays in a very lesser space। Then it also provides supports with multiple data science libraries such as pandas, scipy, matplotlib and many more। हैविंग सेड दैट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोडिंग पार्ट। तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो हमने लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था विच इज़ NumPy, उसे हमें इस Jupyter नोटबुक में इंपोर्ट करना है बाय राइटिंग अ सिंगल कमांड, इंपोर्ट NumPy, जो कि लाइब्रेरी का नाम था, एज व्हाट नेम यू वांट टू इंपोर्ट। सो आई वांट टू इंपोर्ट इट एज NP। तो सिंपली आई डिड एज import NumPy as NP, and now we will perform all the actions of NumPy by just this providing NP as a name। तो विल स्टार्ट विद द अरे क्रिएशन। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि देर कैन बी n डायमेंशनल अरे। सो टू क्रिएट अ 1 डायमेंशनल अरे विच इज़ 1D अरे, व्हाट वी हैव टू सिंपली डू इज राइट np डॉट अरे एंड इनसाइड दैट पास अ लिस्ट, अ सिंगल लिस्ट। तो ये वाला जो है जाकर के एक 1D अरे को क्रिएट कर देगा। सेम वे इन केसेस वेर यू वांट टू क्रिएट 2D अरेज विच मीन्स 2 डायमेंशनल अरे, तो इसमें क्या करना है, 2 लिस्ट को पास करना है। फर्स्ट लिस्ट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6,
and if I run this, you'll see a 2D array has been printed. Same way if you have to create 3D array, तो उसमें भी क्या करना है, एक सिंपल सा इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है. एंड नाउ लेट्स से आई वांट टू हैव अराउंड 7 and then 8 and then 9 here, and now this will go and create a 3D array for me. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Same way if you have to create array which contains only zeros, तो उसमें क्या करना है, np डॉट जीरोस अगर देंगे एंड देन पास द डायमेंशन ऑफ द array, यानी कि 3 रोज होना चाहिए, 2 कॉलम्स होना चाहिए. तो पहले रो से स्टार्ट होता है फिर कॉलम से स्टार्ट होता है. तो इफ यू सी रन हियर, यू विल सी 3 रोज 2 कॉलम्स, ऑल ऑफ देम आर जीरो. इफ़ यू नोटिस कि यहाँ पे जीरो डॉट भी आ रहा है, यानी कि सारा जो है ना फ्लोट के टाइप में क्रिएट हो रहा है. इन केसेस वेर यू वांट टू डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ दिस, यू कैन सिंपली पास डी टाइप इक्वल्स टू int. तो अगर हम लोग रन करेंगे इसको, तो नाउ दैट जीरो डॉट्स हैव बीन गॉन, नाउ ओनली दैट द होल इंटीजर इज देयर. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो क्रिएट अरेज विच कंटेन्स ओनली वंस वैल्यू. तो उसके लिए np डॉट वंस को सिंपली पास करना है. देन यू हैव टू गिव द डायमेंशन दैट हाउ मेनी रोज यू वांट, हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट, and then run the cell to create a array which contains only ones values. This one contains only zeros, this one contains only ones. Same way in list where you had a range of values where you can provide any range and basically get a array created. Similar to that in NumPy we have arrange function. So let's say we want to create a array which contains 10 values, which means 0 to 9. I can simply pass np.arrange and then pass here 10, and this will print the 10 values inside my newly created array. You can pass any values here, and this is very useful whenever you have to deal with huge amount of data, or whenever you want to create a list with a huge values. Then these are the things which you can make use of. Then similar to numerical arrays, NumPy also provides support for boolean as string arrays. So you can simply write np.array and pass all the values as booleans, pass all the values as strings. So basically it should have the similar data type, but any data type you can pass here. So if I run this, this is also my boolean array, this is my string array, and this is how NumPy array creation happens in NumPy library. And now we will move on to the next section, which is array manipulation section. So let's say you have a requirement where you want to convert your 1D array to the 2D array. So there is a function in NumPy which is reshape. By making use of that, we can simply convert any 1D array. So for example, if you see here कि मेरा ये जो array है वहाँ पे 1 to लेकर के 6 तक values है. Now I want to convert this 1D array into 2D array of a shape 3 rows 2 columns. तो पहला row होता है फिर column होता है. Once we define that, and once I run this once I run this cell, you will see that original array was this, and reshaped array is 3 rows and 2 columns. So automatically this got reshaped into 2D array, right? So यहाँ पे से देखिए 1 2 2 3 4 5 6 have come. Now इसका उल्टा है np.ravel. तो अगर मुझे 2D array को 1D में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली ये जो है जाकर के फ्लैटन कर देगा जो भी हमारा 2D array है कि 1 2 3 4 5 6 which are two different one after the other 2D array. Now simply if I run this particular cell by using array.ravel, you will see now raveled array is 1 2 6, whereas the original array had 1 2 3 as a one particular row, and then 4 5 6 was a different row. Now all of them got kind of flattened to a single array. Similar to this, there is also a transpose. So let's say you want to convert your rows into columns and columns into rows. So you would have read in your 12th or 9th mathematics where transpose was used in a matrix. So let's say I have a matrix 1 2 3 and 4 5 6. I want to transpose all the kind of rows into columns and columns into rows. Then I can simply use array.t. So just if you use .t function here, it would basically transpose that. So if you see 1 2 3 4 5 6 got transposed to 1 4 2 5 3 6. Similar to that, there is also a concatenate function in NumPy. So let's say I have two different arrays, array 1 which contains 1 2 3 4, array 2 which contains 5 6 7 8. And now if I want to concatenate these two different arrays, by simply making use of np.concatenate, passing both the arrays variable names and on which axis you want to concatenate. So basically if you want to concatenate on the row, then you have to pass 1. In case you want to concatenate on the column basis, then you have to pass 0.
So let's see what happens when we want to concatenate on axis 1. So if you see 1 2 5 6 have come, so basically all of the things have been concatenated on the row basis. And but now let's see if I want to concatenate on the basis of columns. So I can simply pass 0 here, and you will see that 1 2 3 4 5 6 7 8 have come here. So in cases of F1, 1 2 5 6 were there, and then 3 4 7 8 were there, whereas in case of axis 0 you have all of them stacked one after the other. Similar to concatenate, there is also a V stack, which means if you want to simply stack your arrays vertically, so in that case what you can do is provide both the variable names and make use of np.vstack, give both the array variables name, and then 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 will be kind of vertically stacked. If you see here, vertically stacked is 1 2 3 4 5 6 have come. इसी का उल्टा हो गया एच स्टैक, यानी कि हॉरिजॉन्टली मुझे स्टैक करना है कि दो अरे है मेरे पास, एक अरे में 1 2 है एंड 3 4 है, आई वांट टू हॉरिजॉन्टली स्टैक दिस पर्टिकुलर अरे numpy अरे, तो आई कैन यूज एच स्टैक फंक्शन ऑफ numpy टू सिंपली क्रिएट अ अरे. तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 4 जो कि 2 डिफरेंट अरेज था, हॉरिजॉन्टली स्टैक करने के बाद 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया है. So now we will move on to some of the basic mathematical operations on numpy arrays. तो बेसिकली स्टार्ट करने के लिए सिंपली हम लोग लेट्स असाइन टू डिफरेंट अरेज, a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू 4 5 6. तो एडिशन करने के लिए सिंपल सा प्लस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं. तो ये क्या करेगा, ये दोनों को ऐड कर देगा वैल्यूज़ को, 1 4 2 5 3 6, एंड दैट वैल्यू विल बी प्रिंटेड हेयर विच इज़ 5 7 9. सब्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपली वी हैव टू यूज़ माइनस, और ये दोनों के वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर करके दे देगा, यानी कि 1 -4 2 -5 3 -6. And since we are doing b minus a, so you are not seeing any kind of negative values here. To have a multiplication done, you can simply use star, और ये दोनों arrays को multiply करके you will have an output. To divide, you can use simple slash function here, and it's similar to how you have in list and any other mathematical operations supported by any other programming languages. Same things are supported in kind of numpy arrays as well. In addition to mathematics, it also supports some of the trigonometric functions as well. तो अगर आपको याद होगा कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14 होता है, तो सिंपली लेट्स से आई वांट टू क्रिएट एन अरे जहाँ पे कि आई वांट टू हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ पाई, एंड एक एंगल की लेट्स से पाई डिवाइड बाई 4, पाई डिवाइड बाई 2, 3 पाई बाई 4, and then np.py. So all these values we can simply assign, and once I run this command you will see कि first is 0, 3.14 divided by 4 is 0.78, एंड np.py का जो वैल्यू होता है वो 3.1419 होता है. सेम वे यू कैन ऑल्सो गेट द साइन वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स, साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, एंड tan value as well. Let's also see some of the other mathematical functions which are exponential and logarithmic. So both of them are also supported. So let's say I have an example array 1 2 3 4 5, and I want to find out the exponential value. So if you know the value of e in Euler's equation is 2.71, and that's what it will go and print that 2.71 is for 1, for 2 it is 7.3, and for 5 it is 148. Same way you can also find out all the logarithmic values of given array, and log 1 is 0, log 2 is kind of this value, and then log 5 is this value. You can also find the log 10 ka value here. So all these are mathematical functions which I'm showing it to you ki all of these are supported by numpy, and that is what it making numpy most widely used and most efficient and most powerful libraries for all these numerical operations. So now we will move little more advanced technique which is broadcasting. तो इन ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि अगर कोई मुझे एक सिंगल डिजिट का नंबर है and I want to broadcast this number to all the elements of my matrix or my numpy array. So let's say my numpy array which contains 1 2 3 4 5 6, this is a two-dimensional array, and I want to basically apply a scalar multiplication here. So simply let's say I have a scalar which is number 2, and now I want to multiply 2 to all of the elements of this my particular 2D array. So I can simply use scalar into matrix, and then you will see the value is now 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4, 6, similarly 6 into 2 is 12. So all the elements of this particular array have been multiplied by 2. Similar to that, scalar multiplication, you can also have broadcasting for vector. So let's say I have a vector numpy 1 2 3, and then I have my own 2D array which is 2 1 3
sorry 1 2 3 4 5 6, and I want to apply this vector multiplication to all my results. So if you see the result of this has basically multiplied 1 into 1, 4 into 1, 2 into 2, 2 into 5, 3 into 3, 3 into 6, and that's what it has printed here. So now we will move on to the next section, which is the statistics of array. So let's say I have an array which contains again the same values 1 2 3 4 5 6. I want to find the mean value of all the elements which are present in my numpy array. तो सिंपल थिंग है, np डॉट मीन को यूज़ करना है, पास करना है array का वेरिएबल नेम, and then you will find the mean value which is 3.5. Same way you can find the median of this, which is also in this case 3.5. What is that standard deviation which are present in my particular numpy array? You can simply use std as a function to find out the standard deviation of your numpy array, and in this case this is 1.7078. What is that minimum value of my entire array? What is that maximum value? All of these are also possible if you simply use np.min, np.max to find out what is that minimum value of your array. तो minimum value मेरा इस array में 1 2 3 4 5 6 में 1 था और maximum value 6 है, and that's what it has printed. To find out the sum value, product value, you can also make use of np.sum कि सारे को अगर sum करेंगे तो 21 आएगा, जितने भी elements है उनको multiply करेंगे एक दूसरे से तो value will be 720. Now let's see some of the other functionalities of NumPy. So let's say in cases where you want to generate an array with the random number and uniform distributions. So in that case we can simply use np.random and provide rand, and then in this case what will it do? It will create a 1D array of 5 different elements that you can see here. Key 1D array has been created and all of those are 5 different different elements have been added to your particular array. In cases where you want to create n-dimensional array, in that case you can pass np.random.rand n, and in that case you have to also provide the dimension of your array. So let's say I want to have a 3 by 3 array created, and here you will see 3 different 3 rows 3 columns array has been created for you. Similar to this, there is also indexing and masking available in your NumPy array. So let's say I have a 3 by 3 array 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So now I want to find the index at 0 and 1th position. So again, how it remains in mathematics, this is 0 0 0 0 1 0 2. So same way, let's say I want to find at 0 and 1th position. So you can simply pass array ka 0 and 1, which is this particular position that will be returned to you, which is 0 and 1. This is 0 0 0 1 0 2, and 0 1 is 2. That is what something which has been returned. There's also something called as masking in NumPy array. So let's say you want to print all those values which are greater than 5 in your NumPy array. So you can simply pass array greater than 5 and print that value, and that will be basically given to you, which is 6 7 8 9. Now let's say in cases where you want to have a set operation done. So let's say I have two different arrays. One is np.array 1 2 5, another array is np.array 3 4 5 6 7. So you will see some of them are unique values which are present in your array. So now I want to find my unique values from both the arrays. I can simply use union 1D, and that will give us all those unique elements in our both the arrays which are there. So if you see, if we kind of union, so it's again how you have union in any SQL queries as well. So similar things can also be applied here. Key union 1D I have to do from my both 1D array, and first array contains 1 to 5, second contains 3 to 7, and whatever are the unique elements of this array have been printed here. Another one is intersection. If you want to print, see what are all the intersection values. So क्या क्या value दोनों में मिल रहा है उस value को print करना है, then you can simply use np.intersect 1D and then pass both the array variables, and once I run this, तो दोनों में 3 है, दोनों में 4 है, दोनों में 5 है, and both the value and all 3 values have been printed here. Let's also see some of the other functionalities of NumPy. So we'll start with sorting and searching. तो लेट्स से आई हैव एन अरे जहाँ पे कि रैंडमली कोई भी एलिमेंट्स को रखा गया है, एंड आई वांट टू बेसिकली सॉर्ट दिस अरे. तो आई कैन सिंपली मेक यूज ऑफ np.sort, पास दैट अरे एज अ वेरिएबल, एंड देन द अरे विल बी सॉर्टेड फॉर अस. तो पहले जो
527193 था, अब वो 12357 हो गया। सिमिलरली अगर मुझे कोई एलिमेंट को सर्च करना है इस पर्टिकुलर अरे में कि लेट्स आई हैव टू सर्च 3 वेदर 3 इज देयर और नॉट, इफ इट इज देयर देन इन विच इंडेक्स 3 इज देयर, तो आई कैन सिंपली यूज सर्च सॉर्टेड एज अ फंक्शन ऑन अ सॉर्टेड अरे एंड देन पास माई अरे का वेरिएबल एंड व्हाट इज दैट वैल्यू विच आई वांट टू सर्च। एंड इफ यू सी वंस आई रन दिस इट वुड से कि सेकेंड इंडेक्स पे 3 है, so 0 1 2 and that's where we found our particular element. Last part here कि how do you save your numpy array. So let's say I have an array जो कि 1 2 3 4 5 6 I want to save this, so simply we can make use of np.save function and use a extension as .npy and pass that variable, and then this will be saved to your local system. Similarly, you can also load the saved array by simply making use of np.load function and pass the name of your numpy array which you had saved, and then now you will be able to kind of load that numpy array from your local computer system as well. Alright, so that's wrap on our comprehensive introduction to NumPy for data scientist. So please don't forget to like this video, share your comments and share your thoughts कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, and also share this particular video with your friends and whoever is interested in learning data science. Thank you so much. Thanks. See you in the next video.